Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Virtual ComSex, I welcome all of you to today's lecture. This is a 17th lecture of the Fluid Mechanics series, and I'm your instructor, Dr. Fahad Munir Abbasi. Trivially, as in the beginning of every lecture, I give you a layout of that lecture. So again today, at the start of this lecture, I'll give you a layout of today's lecture. आज के लेक्चर में अगेन जैसे कि रूटीन वाइज हम हर लेक्चर के शुरू में स्टार्ट करते हैं विद द हाइलाइट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. सो आज के लेक्चर में भी हम स्टार्ट करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए, उसकी हाइलाइट्स को देखते हुए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी की, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्या बुनियादी चीज़ें थी जिनको हमने गो थ्रू किया इन द प्रीवियस लेक्चर. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हर आने वाला लेक्चर चूँकि पिछले लेक्चर से इंटरलिंक्ड होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन इट विद अ ग्रेट डील. सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होने की वजह से ज़रूरी है कि हम हर लेक्चर के साथ में एक दफ़ा ब्रीफली ज़रा रिवाइज कर लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें की थी. देन इन टुडेज़ लेक्चर विल एनालाइज द मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट. फ्लूइड एलिमेंट के मोशन से रिलेटेड एनालिसिस जो है वो करेंगे और किस तरीके से होगा वो आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे. देन द फ्लूइड रोटेशन क्या चीज़ है और इसकी डेफिनेशन क्या है एंड हाउ वी एनालाइज द फ्लूइड रोटेशन, ये भी आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा. इसके ऊपर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशन ऑफ फ्लूइड रोटेशन से रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाएगा और फिर उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये भी आज के लेक्चर का पार्ट है. आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वॉर्टिसिटी का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगेन अ कॉन्सेप्ट रादर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड related to the rotation of the fluid is vorticity, and it will be discussed in today's lecture. Vortex flow and circulation का टॉपिक भी आज हम कवर करेंगे. Then the equation of vortex line, हमने equation of stream lines, equation of path lines, equation of streak lines हमने previous lectures के अंदर find out की और calculate की मुख्तलिफ वेलोसिटी फील्ड्स के लिए. हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइंस, स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं. आज इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ वॉर्टेक्स लाइंस को भी देखेंगे कि ये एक तो ये कि वॉर्टेक्स लाइंस होती क्या चीज़ हैं, प्लस इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स लाइंस कैसे हैं और हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. और फिर इस लेक्चर के एंड पे मैं समराइज़ करूँगा टुडेज़ डिस्कशन. आज के लेक्चर में जो कुछ भी हमने किया उसको summarize कर दूंगा in the final few minutes of this lecture. So let's start this lecture with what we studied previously. So previously we studied about the stream function and velocity potential for two-dimensional irrotational incompressible flow which resulted in the Laplace equation. हमने देखा कि कैसे अगर हम इनकम्प्रेसिबिलिटी की कंडीशन के अंदर वेलोसिटी पोटेंशियल की डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट करें तो एट द एंड रिजल्ट इज द लैप्लास इक्वेशन. एंड द अदर वे अराउंड अगर हम इरोटेशनल की कंडीशन के अंदर स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन से u एंड v की वैल्यू पुट करें तो वी गेट द वेलोसिटी पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ द लैप्लास इक्वेशन. तो ये दोनों केसेस के अंदर हमें लैप्लास इक्वेशन ही मिलेगी. एक केस के अंदर इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल और दूसरे केस के अंदर इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन. सो दोनों का सोल्यूशन लैप्लास इक्वेशन इज रादर फेमिलियर टू अस. इन दोनों केसेस के अंदर द एंड रिजल्ट इज लैप्लास इक्वेशन, चाहे हम इसको एक तरीके से कैलकुलेट करें या दूसरे तरीके से. और ये सब कुछ टू डायमेंशनल इरोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए था. पहली कंडीशन सबसे प्राइम दैट द फ्लो शुड बी टू डायमेंशनल, वो इसलिए क्योंकि टू डायमेंशनल फ्लो के लिए ही स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज थ्री डायमेंशनल के लिए स्ट्रीम फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट. इरोटेशनल ओनली बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन expressing the velocity components in the form of velocity potential, so this will only happen if the flow is irrotational. Then incompressible flow, because we need the continuity equation in the form of divergence of velocity, so only the incompressible two-dimensional form of the continuity equation will be applicable here, and ultimate result in both the cases will be the Laplace equation. ये एक चीज़ थी जो हमने previous lecture के अंदर study की.
Then the relationship between the velocity potential and stream function. The relationship between velocity function and velocity potential and stream function क्या है, दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को किस तरह डिराइव किया जाता है. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको एनालाइज किया एंड वी फाउंड आउट दैट द स्लोप ऑफ अ streamline with constant stream function and the product of slope of a streamline with constant stream function with the potential line with constant potential function is equal to -1. यानी कोई भी streamline उसके slope का product with the product of slope of potential line is equal to -1. जैसे दो perpendicular lines का अगर स्लोप का प्रोडक्ट आप लें तो दैट इज इक्वल टू -1. सेम इज द केस हियर. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रीम लाइंस और पोटेंशियल लाइंस हैं फॉर कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और चूंकि इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है. ये रिलेशनशिप हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिराइव भी किया था और इसको यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की थी. प्राइम नोटेशन, प्राइम चीज जो इस डेरिवेशन के अंदर हमने यूज की, दैट वाज द कॉन्सेप्ट दैट द स्ट्रीम फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ स्ट्रीम लाइन एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ पोटेंशियल लाइन. देन इस कॉन्सेप्ट को यूज करते कुछ एग्जांपल्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्व की थी. तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी और एनालाइज की. आज के लेक्चर में अगेन स्टार्ट लेंगे विद द एग्जांपल व्हिच टेक्स दैट टेस्ट वेदर द मोशन स्पेसिफाइड बाय द वेलोसिटी फील्ड ऑफ द फॉर्म गिवन हियर where k is constant is of potential kind, and if so determine the velocity potential. Now let's start. Okay, now the velocity field here is given to us in the form of v is equal to k square minus xj minus yi over x square plus y square, where k is equal to constant. तो अगर x and y components of the velocity को आप separate करें या u and v which are the scalar components of the velocity इनको आप separate करें और अलग अलग लिखें, ये ith component और jth component separate करें, तो we can write it in the form as u is equal to minus k square y over x square plus y square, and v is equal to k square x over x square plus y square. So हमने सिर्फ ith और jth component अलग अलग कर लिए और x component of the velocity चूँकि ट्रिवियली u कहा जाता है एंड y component of the velocity को ट्रिवियली v कहा जाता है, सो हमने u और v की वैल्यू सेपरेट कर ली. अच्छा, पहली चीज़ जो इस एग्जांपल के अंदर हमने डिटरमिन करनी है इस वो क्या है कि वी हैव टू टेस्ट वेदर the motion specified by this velocity field is of potential kind. सबसे पहली चीज़ कि आया ये potential kind का है या नहीं. हमने previous lecture में भी देखा, उसी तरीकाकार के ऊपर इस चीज़ को भी दोबारा कैलकुलेट करेंगे. So I here want you to recall कि आया potential kind के लिए क्या basic condition है जिसको हमने satisfy करना होता है, and that is surely we have to calculate the curl of the velocity field. I, the j, and the k component, where partial by partial x, partial by partial y, and partial by partial z, where u is minus k square y
x square plus y square. V is k square x over x square plus y square, and w is equal to 0. So del cross v तो उसकी ये फॉर्म होगी, और अगर इसको कैलकुलेट करें देन del cross v is equal to k square partial by partial x over x square plus y square into plus partial by partial y over x square plus y square, and all of them are with k unit vector. The I and j coefficients of I and j unit vector will vanish in this calculation, as you can see that when we will calculate the I component of this cross product, then partial 0 by partial y is equal to 0, and partial z by partial v is again equal to 0. When we are to calculate the jth component, again partial 0 by partial x is equal to 0, and partial z by partial u is equal to 0. So the only non-zero component from this cross product will be the kth component, which is given in the next slide. So इसको simplify अगर करें तो you can write it as k square. Note that this k is different from this one. This is with a hat over it represents the unit vector. ये बताता है कि all this written here is the coefficient of the k unit vector, where this k is the constant value which is given in the velocity definition of the velocity field. So it ultimately comes out to be y square minus x square over x square plus y square plus x square minus y square over x square plus y square with the k unit vector. Again मैं फिर बार बार कहता चलूँ कि इन कैलकुलेशंस को, इन सिम्प्लिफिकेशंस को खुद भी वेरीफाई करें और ख़ुद भी वेरीफाई करते रहा करें, ताकि गलती की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है, एहतमाल हो, वो दूर हो जाए, और प्लस द फैक्ट कि आप भी इन चीज़ों से गो थ्रू होके अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपनी कैलकुलेशन को, इन चीज़ों को ज़रा मज़ीद प्योरीफाई कर सकें. सो देन अगर इसको देखें तो थोड़ा गौर से, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर इज द सेम. न्यूमरेटर में से अगर -1 आप कॉमन लें तो ये तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं. सो इट सिंपली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. हेंस del cross v is equal to 0, and obviously this is a dimensional 0, not dimensional 0. तो जब डेल क्रॉस v इक्वल टू 0 हो, यानी कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द आउटपुट. ये इसका मतलब क्या है फिजिकली, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, या क्या किस चीज़ को ये फिजिकल रिप्रेजेंट करता है. तो इट ओनली मीन्स दैट द फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड और इट इज इररोटेशनल फ्लो. नाउ thus the flow is of potential kind and a potential kind का है, तो then what we will be doing, and we can find the
velocity potential, or in other words we can find phi as a function of x, y and z such that definition phi ki partial phi by partial x with the negative sign is equal to minus u, and minus u की value which is given in this example is k square x over x square plus y square. This is the same value that we computed from the velocity field given, where u is equal to minus this, and minus obviously u will be equal to this thing. और in other words अगर आप इसको सिर्फ इस माइनस को देखें, this is with the plus sign, लेकिन जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे एक आपको नेगेटिव मिलेगा. So ultimate output will be partial phi by partial x is equal to partial by k y over x square plus y square. So again this is k y square partial by partial x, and yeah, there is a small y here instead of x, obviously k square y. So partial phi by partial x is equal to ky over x square plus y square. Name this as equation 1. Similarly, partial phi by partial y is equal to minus k square x over x square plus y square. Well, I've written it fine. Yeah, obviously there is a k square here too. So minus k square x over x square plus y square, I name this as equation 2. And obviously partial phi by partial z is equal to 0, which shows that phi is not a function of z. Phi is not a function of z, or phi is a function of x and y alone. सिर्फ और x और y का फंक्शन है जी, और इसके अलावा किस चीज़ का फंक्शन नहीं है ये जो phi है. देन इन दो इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कैलकुलेट करते हुए हमने phi कैलकुलेट करना है. अगेन सिंपली जिस तरीके से इंटीग्रेट करके हम कैलकुलेट करते आए हैं इससे पहले. Integrating by integrating equation 1, we have this is a partial phi by partial x. What was equation 1? Yeah, partial phi by partial x is equal to x square k square y over x square plus y square. This is equation 1, and integrating this results in the fact that phi of x and y equals k square tan inverse x over y plus f of y. F of y because it's the integration is with respect to x, so hence we have considered a function of y here. Name this as equation 3. Now from इक्वेशन 3 से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज हम इसको
डिफरेंशिएट करके फिर अपनी इक्वेशन 2 से कंपेयर करना चाहते हैं. सो पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू f prime of y minus f prime of y minus k square x over x square plus y square. By comparing equations 4 and 2, equation 4 and 2 को अगर हम compare करें, so comparing equations 4 and 2, we simply get that f prime of y is equal to 0 or f of y is equal to constant. F prime of y is equal to 0 or clearly suggests that f of y is equal to a constant, or simply the velocity potential or the phi of x y comes out to be k square tan inverse x over y. Yep, only this, because f of y is equal to constant, and we can simply say that हम इसको equal to 0 suppose कर लेते हैं. So we take the simplest of the constants, then name this as equation 5. Now the equipotentials are thus given by the plane on which phi of x y is equal to a constant. और इस कांस्टेंट को कोई भी नाम दे दें, जैसे k1 का नाम दे दें इसको. देन k स्क्वायर tan इनवर्स x और y is equal to k1 or simply tan inverse x over y equals k1 over k, or in other words x over y is equal to tan k1 over k, and since k1 and k both are equal to constants, so x over y is equal to c, or x is equal to cy. This is equation 6 simply. अच्छा देखें इक्विपोटेंशियल्स क्या चीज़ हैं. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, वो तमाम लाइंस या वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो या कांस्टेंट हो, वो इक्विपोटेंशियल्स कहलाती हैं. सो इक्विपोटेंशियल के लिए हमने वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू को एक कांस्टेंट के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया एंड देन उस इक्वेशन को एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर लिया. सो दिस वाज द एग्जांपल व्हिच वाज गिवन टू अस एंड वी हैड टू सॉल्व इट and we had to test whether this is a potential kind of function or not, and if it is of potential kind then we had to determine the velocity potential. So सबसे पहले हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद जब ये इक्वल टू 0 आया तो then we determined के okay this function is of potential kind, and now we have to find the velocity potential which is phi
तो हमने जो फाई की कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस थी, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी, इनको यूज़ करते हुए हमने फाई की वैल्यू कंप्यूट की एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस के लिए हमने फाई की वैल्यू को कांस्टेंट के इक्वल रखा एंड एक्स एंड वाई के लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर लिया. सो दिस इज हाउ टू डू इट. Now the motion of a fluid element, let's start with that, क्योंकि ये जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की है तो चूँकि पिछले लेक्चर से इसकी कंटिन्यूटी में थी, एक आध मज़ीद एग्जांपल करने की मैं ज़रूरत महसूस कर रहा था, so I solved it here for you. Now the motion of a fluid element which is related to the kinematics. Well, in general, modes of travel of a fluid element consist of translation, rotation and deformation. The deformation aspect of the fluid element is of two kinds: linear deformation, which is due to normal stresses, and angular deformation due to shear stresses. Linear deformation is in turn classified as dilatation, which is related to the expansion as well, when volume increases, and contraction when volume decreases. Now, linear deformation is also called pure strain, and the angular deformation is called the shear deformation. देखें, ये सारे आगे इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ तक देखें फ्लूइड की जो मोड ऑफ ट्रांसफर्स हैं या मोड ऑफ ट्रैवलिंग है, मोस्टली जनरली तीन तरह के होते हैं. एक, या तो फ्लूइड ट्रांसलेट करे, दूसरा या तो फ्लूइड रोटेट करे, या तीसरा या फ्लूइड डिफॉर्म करे. जो डिफॉर्मेशन है उसके मज़ीद दो एस्पेक्ट्स हैं, या तो लीनियर डिफॉर्मेशन हो, वो जो कि नॉर्मल स्ट्रेसेस के एक्शन के वजह से होती है, या तो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो विच इज़ ड्यू टू द shear stresses. Now, linear deformation in turn is also classified as dilatation and contraction, which means expansion and compression respectively. Now, linear deformation is also called the pure strain, and the angular deformation is called the shear deformation. Linear deformation of a fluid element occurs when it passes through a zone of acceleration or deceleration. The dilatation or expansion of a fluid element would occur if it is passing through a decelerated flow region and both the fluid element and the axis are experiencing a linear expansion in their dimensions. The contraction or reduction of the fluid would occur if it did pass through an accelerated flow region. Decrease or increase in the magnitude of the normal stresses is responsible for dilatation or contraction respectively of the fluid element. Coming towards the fluid rotation. Now, the fluid rotation is one of the mode through which the fluid travels or moves from one place to another when a change in its location occurs. Now, according to the definition, the average angular velocity of any two mutually perpendicular line elements of the particle is called rotation, represented by the Greek letter omega. Obviously, it is a vector quantity of the particle. Now, rotation is a vector quantity. A particle moving in a general three-dimensional flow field may rotate about all three axes. Generally, we can write the omega as omega x, omega subscript y, and omega subscript z, where the subscripts x, y, and z denote the components in the I, j, and k directions, respectively. Again, obviously, I think it seems that there is say misprinting here, and we will omega z is the rotation. Omega z is the rotation about z axis. So, ये जो rotation of the fluid particle है, this is the angular velocity of our two mutually perpendicular line elements. अगर दो line elements fluid particle की mutually perpendicular हैं, तो इनकी जो mutual relative velocity है, वो
रोटेशन ऑफ द फ्लूइड कहलाएगी, जिसको आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, एक फिगर भी आपको शो करूंगा, एंड ऑब्वियसली उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब कैलकुलेट करेंगे तब भी आप देखेंगे। बट अभी तक के लिए ये देखें कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ थ्री obviously a coordinate representation. Omega x is the x coordinate of it, omega y is the y coordinate, and omega z is the z coordinate for the rotation. And obviously the subscript x, y and z represent the rotation in the respective directions. Now the positive sense of rotation is given by the right hand rule. So positive rotation right hand rule के ज़रिए कंप्यूट की जाती है। right hand rule से तो आप लोग familiar होंगे, और अगर नहीं हैं तो it simply is given that if you roll the fingers around from one vector to another, then your thumb points in the positive direction. So अगर आप एक लाइन एलिमेंट से दूसरे लाइन एलिमेंट की तरफ जाएं तो जिस थंब में आपका जिस डायरेक्शन में आपका थंब जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इन द पॉजिटिव सेंस। सिंपली अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, देन द डायरेक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टेक फॉर इंस्टेंस, अगर आप सिंपली एक वेक्टर को ऐसे कंसिडर करें से v, और एक वेक्टर को ऐसे कंसिडर करें से f, तो अगर आप यहाँ से ऐसे मूव करते हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन फ्रॉम द लोअर टू द अबव वेक्टर, देन दिस इज f, तो देन द डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी आउटसाइड द बोर्ड। इस प्लेन से आउटसाइड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इफ़ यू मूव फ्रॉम v टू f, आप वेक्टर v से वेक्टर f की तरफ अगर जाते हैं और अपनी फिंगर को कर्ल करते हैं तो आप देखेंगे कि योर थंब विल बी पॉइंटिंग आउटसाइड द बोर्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसको इस तरीके से कंप्यूट करें कि आप वेक्टर f से वेक्टर v की तरफ जाएं, दैट इज इफ यू कैलकुलेट, इफ यू गो टू v फ्रॉम f, then it will be, say, your thumb will be pointing inside the board. अगर वेक्टर f से वेक्टर v की तरफ using your right hand finger को curl करें तो then your thumb will be pointing inside the board. So this is the right hand rule to take the positive sense of rotation, which is necessary in this topic. Now the mathematical expression for the fluid rotation, हम mathematical expression अगर fluid rotation के लिए define करें तो to determine the development of rotational character of flow fields, let us consider a fluid element of rectangular shape with sides delta x, delta y in a two-dimensional flow field. See figure on the next slide. Here it is. Take a look at this. There is a x-axis and a y-axis. हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया विद साइड्स OA, AC, CB and BO. This is the fluid element. U here is the x component of the velocity, V is the y component of the velocity. अब देखें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की वेलोसिटी से यहाँ क्या मुराद है? एक ये कि चूंकि फ्लूइड एलिमेंट है तो इसके ऊपर फोर्स तो लग रही है और इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो बहरहाल किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर है। सो इसकी y कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग जो लेंथ है उसको डेल्टा y हमने कह लिया, और x कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग जो लेंथ है उसको हमने डेल्टा x कह लिया। सो द वेलोसिटी एट पॉइंट B इन द x डायरेक्शन is given by u plus partial u by partial y delta y using the Taylor's theorem, and velocity at point A in the y direction is given by v plus partial v by partial x delta x. This is the figure of the velocity components on the boundaries of a fluid. Now it is assumed that the velocity vectors increase in value in the increasing direction of coordinate axis. Consider motion of a fluid element in the xy plane. The components of the velocity at every point in the flow field are given by uxy and vxy. Now if the velocities at points A and B are different from the velocities at point O, then during the time delta t the mutually perpendicular lines OA and OB will rotate. देखें सिंपली हो क्या रहा है,
अगर तो इस पूरी लाइन OA के पैरेलल पे A की वेलोसिटी लग रही है इन द y डायरेक्शन, ठीक है, तब तो इट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर वेलोसिटी पॉइंट O के ऊपर जो वेलोसिटी द y डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय v, एंड अगर इस पॉइंट A पे जो वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय v प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल x डेल्टा x, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी एट पॉइंट O। लाइकवाइज अगर पॉइंट O पे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय u, एंड पॉइंट B पे जो वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय u प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y डेल्टा y। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक साइड के दोनों एंड्स पे मुख्तलिफ है, और जब एक साइड के दोनों एंड्स पे वेलोसिटी मुख्तलिफ है तो फिर ऑब्वियसली एक जो एज है, एक जो कॉर्नर है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा बनिस्बत दूसरे के, एंड हेंस देयर विल बी अ रोटेशन। सिंपली अगर आप कोई भी शेप, अगर आप कोई स्क्वायर शेप से इसको एक्सपेरिमेंट करें तब भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक सिंपल पेन भी होल्ड करें और आप ये देखें कि इसको आई ड्रॉप्ड इट ऑब्वियसली, ये देखें कि अगर आप इसको सिंपली एक तरफ थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, व्हिच सिंपली मीन्स कि इसके दोनों एंड्स पे वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, एक्सेलरेशन एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक जैसी नहीं लग रही। सो जब आप इसको रोटेट करेंगे इन एनी डायरेक्शन, तो अगर तो दोनों साइड्स के ऊपर वेलोसिटी सेम है तो फिर ये एक तरह से मूव करेगा, बट अगर एक एंड पे, एक कॉर्नर पे वेलोसिटी कम है और दूसरे पे ज़्यादा है तो देन इट विल मूव इंस्टेड, इट विल रोटेट इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन। सो दिस इज द पॉइंट हेयर कि दो कॉर्नर्स पे वेलोसिटी अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रोटेशन टेकिंग प्लेस। Now rotation of line OA, the rotation of the line OA of length delta x is due to the variation of y component of velocity. If v naught is the y component of velocity at the point O, then by Taylor's series expansion the y component of the velocity at point A can be given as which is given in the next slide here, can be given as v is equal to v naught plus partial v by partial x delta x. ओके, एंड इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। बट बिफोर दैट आई अगेन वांट टू टेल यू एंड वांट टू शो यू कि व्हाट रोटेशन सिंपली मींस। तो देखें इनिशियली जो फ्लूइड एलिमेंट था वो यहाँ पड़ा था, ये उसकी ओरिएंटेशन थी ओ ए से यहाँ पे कोई पॉइंट था सी एंड बी। अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी लग रही थी एट पॉइंट ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी एक्टिंग at point O in the upward direction. So यहाँ की निस्बत यहाँ से वेलोसिटी तेज हुई जिसकी वजह से रोटेशन हुई। Now this rotation tilted the body। अब बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, जो कि पहले O B पे थी अब वो O B प्राइम पे, एंड लाइकवाइज O A से O A प्राइम पे उसकी लोकेशन ट्रांसफर हो गई। B प्राइम A प्राइम हमने नीचे भी नाम दिए, बट दिस इज इन दिस पॉजिटिव सेंस। सो ये रोटेशन हुई एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एंगल। वाई एक्सिस से जो एंगल का डिफरेंस आया उसको हमने डेल्टा बीटा कह दिया, और एक्स एक्सिस में जो एंगल की वेरिएशन है उसको हमने डेल्टा अल्फा कह दिया है इसको, एंड यहाँ ये डिनोट किया। एंड द चेंज इन द एक्स एंड वाई कंपोनेंट इज गिवन बाय डेल्टा ईटा एंड डेल्टा एक्साई, विच आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द रोटेशन, जो कि आगे हम डिराइव भी करेंगे। Now the angular velocity of the line OA is given by equation 2 here, where delta eta by delta x is the ratio of the angular velocity to the angular distance here. Now again simply delta eta by delta t is given as the partial v by partial x into delta x and partial v by partial x into delta x delta t. So simply calculating these components result us that the omega of OB is equal to negative of partial u by partial y. By simple computation we come out to reach at equation 5 that omega, this is omega, OB is equal to minus partial u by partial y. So the rotation of line OA comes out to be partial v by partial x, and similarly the rotation of line OB is given by partial minus partial u by partial y, because it is in the
anti-clockwise direction. Now the rotation of the fluid element about z-axis is the average angular velocity of the two mutually perpendicular line elements OA and OB in the xy plane. Okay, the WZ here gives us the z component of the rotation. चूँकि rotation को हमने omega से represent किया and हमने देखा कि omega के x, y and z components तीन different directions के अंदर occur करते थे. So the rotation about the z-axis is given by omega z, and this is the average angular velocity of two mutually perpendicular line elements, जो कि line elements की average velocity हमने calculate की line OB और OA की, and this is their average velocity. In a similar manner, we can find the rotations about the x and y axis of the fluid element respectively as given in equation 7 and equation 8. अब equation 6 to equation 8 को अगर combine कर दें, making use of the definition of the angular velocity or the rotation, तो we ultimately get the expression for omega as given in equation 9, which is which has three components: the I component, the J and the K component, given by partial omega, partial W by partial Y minus partial V by partial Z, which is this is the I component of the rotation, then partial U by partial Z minus partial W by partial X, which is the jth component, and partial V by partial X minus partial U by partial Y, which is the kth component. Another thing, that this, don't confuse this W with this omega. W here represents the Z component of the velocity, where omega is the rotation. Now the above result reveals that rotation omega is equal to 1/2 of the curl of the velocity vector. This is given in equation 10. तो अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करें और क्रॉस प्रोडक्ट से, जो कि अभी हम कई दफ़ा कैलकुलेट भी कर चुके हैं, वी आर फेमिलियर विद दैट, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए इसको, देन ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी और डेल क्रॉस वी. दिस 1/2 separates this rotation from del cross V. So simply rotation is related to the curl or the cross product of the velocity by this factor 1/2. Hence we can say that rotation is the half of the curl of a velocity V. This is a very important result. ये जो rotation is equal to 1/2 of curl, this is an important relation, and you can see that how we relate it with the vorticity. Now the vorticity, represented by the Greek letter omega, is defined as a vector that is twice the rotation vector, or mathematically we can write it as omega is equal to 2 times rotation, or equals to del cross V, and we have named this equation 11. Okay, take a look at this. This is very important result here, or very important comparison which we are presenting here. Vorticity क्या चीज़ है? Vorticity, obviously Greek letter omega से इसको represent करते हैं, is defined as a vector that is twice the rotation of a rotation vector. जो rotation vector हमने calculate किया, उसका twice या उसका 2 times is equal to the vorticity vector, और which is equal to del cross V. So अभी तक तो हम irrotational flow के लिए या पोटेंशियल फ्लो के लिए डेल क्रॉस वी कैलकुलेट करते रहे, और डेल क्रॉस वी को इक्वल टू 0 रख के हम कंपेयर करते रहे, या फाइंड आउट करते रहे कि आइदर अ गिवन फ्लो फील्ड इज इरोटेशनल और नॉट. सो अभी वी जस्ट फाउंड आउट और एंड वी डिफाइंड इन द वॉर्टिसिटी एज वेल कि पहली चीज दैट रोटेशन इज हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ वी, एंड सेकेंडली that the vorticity is twice of rotation or simply equal to the curl of the velocity field. Well, with its component, इसके जो x, y, z components हैं, उसको eta, xi is the x component, is defined as the x component of the vorticity. Eta and psi are the y and z components respectively. And in the notation form, it is represented like this, where xi, I, eta, j are the x and y components of the vorticity vector. Now vortex flow.
What is vortex flow? A flow pattern in which the streamlines are concentric circles is a vortex, simply called as vortex, and the flow of such type is known as vortex flow. देखें स्ट्रीमलाइंस के सर्कल होने से क्या मुराद है? अमूमन आपने वर्लपूल्स देखे होंगे, या सिंपली अगर आप किसी बकेट में वाटर लेके उसको रोटेट करने लगें तो एक वर्लपूल की फॉर्म के अंदर, एक पानी के अंदर आपको रोटेशन फील होगी. स्ट्रीमलाइंस की डेफिनेशन को ज़रूर जहन में रखें. स्ट्रीमलाइंस ऐसी लाइंस हैं जिनके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलनी चाहिए. सो ऐसा कोई भी फ्लो जिसके अंदर स्ट्रीमलाइंस सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के अंदर हों, देन दिस इज कॉल्ड वॉर्टेक्स फ्लो, एंड दिस इज द पैटर्न इज कॉल्ड द वॉर्टेक्स. Or in other words, a vortex flow represents a flow in which the streamlines are concentric circles. Vortex motion can be either rotational or rotational. यहाँ पे भी ये चीज़ important है कि देखें ज़रूरी नहीं है कि vortex motion हमेशा rotational ही होगा. It can be rotational as well. If the type of vortex motion is rotational and cannot be described with a velocity potential, then the rotational vortex is commonly known as the forced vortex, whereas the irrotational vortex is usually called the free vortex. देखिए force और free vortex अकर करते हैं. जहाँ पे rotational motion हो और vortex के दौरान the type of vortex motion is rotational and it cannot be described with a velocity potential, then the rotational vortex is commonly known as forced vortex, and otherwise it is called free vortex. Now the circulation again represented by the capital gamma is defined as the line integral of the tangential component of the velocity vector around a closed curve C fixed in the flow field. Simply circulation को define किया जाता है as a line integral of the tangential component of the velocity vector around a closed curve. Velocity के tangential component का integral around a closed curve जो कि डिफाइन किया जाता है थ्रू दिस रिलेशनशिप एज वेल, एंड दिस सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन रिप्रेजेंट्स दैट द इंटीग्रेशन इज along a closed fixed curve. Now the Kelvin's circulation theorem, this is an interesting theorem. It says that an ideal homogeneous fluid with conservative body forces, the circulation around a closed curve moving with the fluid remains constant with the time, or this is d gamma by dt is equal to 0. Note that the vorticity possesses conservative property, and the vorticity is a sinusoidal vector. What is a sinusoidal vector? And this is you should be familiar with. अमूमन जनरल नॉलेज के लिए भी एंड डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ पूछ लिया जाती है कि व्हाट इज़ अ सोलिनॉइडल वेक्टर. सो a vector v is solenoidal vector if del dot v is equal to 0. अगर तो del dot v is equal to 0, then the vector is called the solenoidal vector, or divergence of v is equal to 0. या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ v अगर किसी वेक्टर की 0 है तो we can say that this is the vector v is the solenoidal vectors. Simply the vorticity is solenoidal vector. तो obviously अगर आप इसको दूसरे कंपैरिजन में कंपेयर करें, जो कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड कर्ल और डाइवर्जेंस से रिलेटेड, तो उसको भी देखें बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कर्ल. सो कर्ल की अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो उस पर क्या नतीजा निकलेगा, ये आई लीव इट अप टू यू, बट दिस इज फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट अ solenoidal vector is in general. Now the vortex lines. Vortex line is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of the vorticity vector.
vorticity वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर हो जब भी हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, and the necessary and sufficient condition for potential flow may be expressed as omega is equal to 0. Now the equations of vortex lines can be found making use of the relationship given here. Let us call this equation star. This equation star को use करते हुए हम the x, y and z components find out कर सकते हैं, and we can find out the equations of the vortex lines as we did for the case of streamlines. Now in Cartesian coordinates, now in general these do not coincide with the streamlines. Streamlines के साथ vortex lines coincide नहीं करती. Streamlines और चीज़ हैं, vortex line और चीज़ हैं. Take for instance this example. For an incompressible fluid, V is equal to minus Wi is the x component, Wx is the y component, where omega is constant. Now find the equations of vortex lines. Equation of vortex lines हमने find करनी है, and we are provided with the velocity field, x and y components of the velocity here. So let's see how we calculate the equations of vortex lines. Given that u is equal to minus Wi and v is equal to Wx, w is equal to constant here, and obviously z component or w of velocity is equal to 0 here. So देखें इक्वेशन ऑफ vortex line की डेफिनेशन क्या है. सबसे पहले dx by xi dy by eta plus equal to, there is a equal to here instead of this plus, equal to d psi by this psi. So हमें xi, eta और psi का पता होना ज़रूरी है, making use of the u and v if we are to find out the equation of vortex lines. Now we have to find del cross v, or we have to find the vorticity vector जो कि I, j, k, again these are unit vectors, partial by partial x, partial by partial y, partial by partial z and simply wi, wx and 0, and it comes out to be to wk, which is not equal to 0. Obviously अगर ये 0 हो जाता तो फिर vorticity vector would have been 0 and the flow would have been of the potential kind, but this is not the case here. So simply omega here is equal to 0, 0, and the z component is not equal to 0, and so substituting xi equal to 0, eta equal to 0 and psi is equal to 2w into this equation static, we get that w dx is equal to 0 and
2w dy is equal to 0 simply as 2w is not equal to 0, so simply dx is equal to 0 and dy is equal to 0, or x is equal to constant and y is equal to constant. So x and y are constants, and this is the equation of vortex lines where x and y are constant. So जब भी आपसे equation of vortex lines कैलकुलेट करने का कहा जाए, आप सबसे पहले vorticity vector फाइंड आउट करें, उसके x, y and z components फाइंड आउट करें. जब वो फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उनको यूज़ करते हुए you can find the equation of vortex lines here as we did in this example. इसी तरह अगर आपको मुख्तलिफ कोई वेलोसिटी फील्ड गिवन हो और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड द वॉर्टेक्स इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स लाइंस, तो इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए यू विल सॉल्व दैट, यू विल गो फॉर दैट. सो विद दिस let's move to the summary of this lecture. This is what we did in this lecture. Initially we started with an example, एक example जो कि previous lectures में थी. Again potential type of flow हमने discuss करना था and potential velocity potential find out करना था. उस example को लेके चले मज़ीद को थोड़ा सा focus किया velocity potential से related and potential type flow से related. फिर आज के लेक्चर में we studied about the motion of a fluid element. fluid element के मोशन को हमने थोड़ा सा स्टडी किया. हमने देखा कि कैसे फ्लूइड के मोशन कितनी तरह के होते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है एंड डिफॉर्मेशन हो सकती है. फिर रोटेशन को डिटेल से तो हमने स्टडी किया ही किया, थोड़ा सा रफ एस्टिमेट हमने डिफॉर्मेशन का भी लिया और हमने डिफॉर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन. एंड वी स्टडीड दैट the linear deformation only takes place when normal stresses are applied onto a body, and the shear stresses takes place when the shear stresses result in the angular deformation of the fluid element. So इस तरह से फ्लूइड को मूव किया जा सकता है या फ्लूइड मूव करता है तीन तरीकों से, जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन शामिल है. तो फ्लूइड रोटेशन के लिहाज से हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी दैट दिस इज द एंगुलर दिस इज द relative velocity of the two mutually perpendicular line elements of a fluid element. Then mathematical expression हमने derive किया for the rotation of the fluid. fluid rotation के लिए हमने mathematical expression derive किया and उसको calculate किया by taking into account element of fluid और उसकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एलिमेंट्स की म्यूचुअल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की. देन वी वेंट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड द वोर्टिसिटी एंड वी सॉ दैट टॉइस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू वोर्टिसिटी और वोर्टिसिटी वेक्टर इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ velocity field. Then we studied about the vortex flow and circulation. We studied the Kelvin circulation theorem. Then the equation of vortex line हमने स्टडी की और फिर एक एग्जांपल सॉल्व की जिसमें हमने देखा कि हम कैसे equation of vortex lines फाइंड आउट कर सकते हैं. equation of vortex lines को कैलकुलेट करना ऑब्वियसली तकरीबन उसी पैटर्न के ऊपर है जहाँ पे हम स्ट्रीम लाइंस को कैलकुलेट करते हैं, बट सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे हमें एक्स, वाई एंड जी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द vorticity vector चाहिए होते हैं instead of only the x, y and z components of the velocity components. So जब भी आपको velocity field provided हो, उसके x, y and z components provided हो, तो you can calculate the equation of a vortex line, but for that you have to first calculate the vorticity or the curl of the velocity field as well. And with this I take you to today's quote, and this states that do not hesitate to ask about what you do not know. आपको अगर कुछ नहीं पता, आप अगर कुछ नहीं जानते, तो कभी भी हिचकिचाएं मत उसको पूछने के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए. अमूमन इट इज़ बिट हार्श अगर मैं आपसे इस चीज़ को डिस्कस करूं कि हाँ हमारे समटाइम्स हमारी सोसाइटी या हमारा सोशल सर्कल या इवन हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्वेश्चनिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, इसको इतना ज़्यादा एडमायर नहीं किया जाता, एंड विच इज़ अ बिग drawback in this social network
एंड द एजुकेशनल सिस्टम एज वेल, क्योंकि ये जो क्वेश्चनिंग करने और सवाल करने की आदत को डिस्करेज करना है, ये स्टूडेंट के फलने फूलने की कैरेक्टरिस्टिक को रोक देती है. इवन स्टूडेंट्स फील शाय अबाउट कि डोंट नो आई शुड बी आस्किंग दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन और नॉट, और डोंट नो if the teacher will say get annoyed at me. So get out of it, get out of this feeling. इस feeling से बाहर निकलें and do not hesitate to ask about whatever you don't know. जो कुछ भी आपको नहीं पता और जो कुछ आप जानना चाहते हैं, एक फरमान है और बड़ा खूबसूरत है कि सवाल करने की खूबी इल्म की तरफ पहला कदम है. ये ज़रूर है अपने लहजे को पोलाइट रखें और खालिस्तन सीखने की नीयत रखें. तो ये दो चीज़ें करके जब भी आप किसी चीज़ का सवाल करेंगे और कोई चीज़ पूछेंगे, कुछ चीज़ क्वेश्चन करेंगे किसी चीज़ से रिलेटेड, तो यू विल गेट द आंसर. बट वट एवर द केस इज, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं आप सीख नहीं सकते. जब तक आप पूछेंगे नहीं, किसी को ये नहीं पता चल सकता कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, क्या चीज़ है जो आप जानते हैं और क्या चीज़ है जो आप नहीं जानते. सो क्वेश्चनिंग किया करें, पूछा करें, पूछने से ही नॉलेज बढ़ेगा. और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ऑफ ज़रूर आप अपनी क्वेश्चनिंग के ऊपर और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चनिंग करेंगे विद से सॉफ्ट टोन, ताकि आपके टीचर्स और मॉडरेटर्स और आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो आपके क्वेश्चन से इरिटेट ना हों, बल्कि इंकरेज हों to give you answers of what ever questions do you want. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ दे. Till our next lecture, it's Allah Hafiz from my side.